that our generation was a very ignorant generation. In comparison to our generation, your generation is much, much informed, better informed. You have got access to technology, internet, YouTubes, remote assistance or guidance. Our very session, it was not possible once upon a time. आज आप पता नहीं कहां से जुड़े हैं. ओके, मैं यहां पर लखनऊ में बैठा हुआ हूं शहर में, and we are connected from all nooks and corners of the country. Our generation में the information and the guidance about the SSBs was very, very little, negligible, minuscule, must I say. Today, any person, fresher, repeater, has got at least the information about what SSB is, what will be the sequence of events, and to a very great extent, the person, right or wrong, I'm not saying, he has got the idea or she has got the idea how to custom your responses, how to present your responses. This is a fact. Your generation, therefore, is better informed. So much so that some people, they have, what must I say? They have leaked out the pictures also of TAT. At least 50 to 60 pictures, okay? They have been shared with the public. I don't know who this person was. आपके पास पहले से पता भी था कि कौन कौन से pictures हैं. Somebody has shared some with me also. कि सर आप कौन सी दुनिया में बैठे हुए हो? ये है pictures. Friends, despite all these, your generation is better informed, much more access to various people, okay, mentors, YouTubers. लेकिन एक ugly reality है, you will all agree with me, that the selection rate has not gone even a notch up. इतना भी नहीं ऊपर बढ़ा. Now, this is the thing that bothers me as an experienced mentor, guide, an experienced person in this system of selection. And even after retirement, I have been associated with multiple organizations, government-sponsored organizations, government-run organizations. I'll give my detailed introduction a little later. But the fact remains that a lot of information has created only a confusion. And to quote one of my friends who is in the ecosystem of SSB training and interviewing officer, I'm quoting his words. He says, sir, today the generation is suffering from information hangover. Understand? Information hangover. There are multiple sources, multiple resources, multiple thoughts, and a candidate is, okay, like what Bachchan ji has told, na? मधुशाला में क्या कहते हैं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाए असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर पूछो बतलाता हूं. अब देखिए, इतना ही. You have got an aim, well-defined aim to crack SSB and prove your employability factors, employability qualities before the selection system. There are multiple suggestions, multiple mentors, and you are still confused. And the end result is not even a notch up since last about 3 to 4 decades. This is the reality. Let us not deny this reality. And therefore, it needs a very, very serious
review in the hindsight, I should say we need to audit multiple things. What do we need to audit? We need to audit our preparation methodology, our preparation content, the sources and the resources. We need to take a good stock, critical stock of these things. And if we understood SSB as a system, which way it is similar to other system of personal selection and which way it is different. This is the fundamental point of departure. Actually होता क्या है friends? I'm sorry, मुझे by habit English ज्यादा मतलब इंस्ट्रक्शनलिस्ट में आदत है. हम क्या करते हैं ना कि जैसे रिले रेस में आपने देखा होगा ना, जैसे 4x100 रिले रेस होती है. तो एक बंदा दौड़ता है 100 मीटर और द बैटन इज हैंडेड ओवर इन हिज लेन टू अनदर पर्सन. तो बंदा पीछे से हाथ ऐसे लगा करके जो है वो थोड़ी थोड़ी देर तक दौड़ना शुरू करता है टू पिक अप द स्पीड. एंड द मोमेंट ही गेट्स द फील ऑफ द बैटन इन हिज कप ऑफ द हैंड, ही टेक्स ऑफ, भाग गया. उसको पता नहीं कि उसकी लेन वाले ने रखा कि किसी और लेन वाले ने रखा. द सेम थिंग इज देयर. वी डोंट रियली इंक्वायर क्या होता है. हम सिलेक्शन जब भी अपना शुरू करते हैं तो सिलेक्शन की तैयारी जब शुरू करते हैं तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ थॉट्स को हम लोग फॉलो करने लगते हैं. वो थॉट्स इन सम वेज दे आर to some extent right also, wrong also. I won't say wrong, but they don't have much of, in some ways, they don't have much of the learning values. I won't trash those thoughts. सबकी अपनी methodology होती है. I won't trash them. I'm only saying that it requires a serious scrutiny, a serious audit. तो आज फ्रेंड्स हम SSP orientation in my guidance programs, I'll tell you in detail मैं क्या क्या करता हूँ, which way I'll give my detailed introduction a little later. Be patient. लेकिन right at the beginning, let me very honestly, very humbly put before you that we are today in this session not going to talk any test or any particular technique. We will be discussing about the orientation and the concept, what SSB is and what it is not, and particularly today we'll be having what SSB is not. In the light of the various beliefs and the opinions which are coming across, which your mind is, and some of these things have cut very deep eyes in your minds. Okay, friends. So with this background, I will now switch over to my PowerPoints because let me tell you, ये general talks हैं and there could be endless length on any particular thing. So to keep myself well disciplined, okay, within the bounds of the terms, I'll now switch over to my PowerPoint slides and the points will be there in the bulleted form and we'll be developing it session by session. This session is having 3 or 4 stoppages in between. Okay. So here, please bear with me. Where is share? Where is share? Where is share? Chat, record. Yeah, this is share. Please bear with me. This is opening slide. Okay. Just a minute. Just a minute. Yeah. This is the opening slide. You can see SSB preparation with my name, Group Captain Srivastava. Yes, once upon a time, I was also a young man like you. Here you can see the young group captain, okay, sitting in his chair. YouTube handle is this. Okay, like, subscribe. This is merely the request. Now, session 1, first part of the session, and its conclusion is nothing is better than something. Young friends, this appears paradoxical. आपने जो इंग्लिश की प्रोवर्ब सुना होगा वो क्या कहता है
कि something is better than nothing. हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं उसको कभी कभी प्यार से, भागते भूत की लंगोटी ही बहुत है ना? But here I am saying nothing is better than something, friends. It means that if you are going with a clean and blank mind, this is much more healthier, much more hygienic, much more salubrious, much more stimulant to your success. अब वो क्या चीज है हम लोग देखेंगे उसको वन बाय वन. यहां मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए. Ask 3 questions to yourself. One, what is the aim of our interaction? Second is, what do we wish to achieve? Let us say, if it is the guidance program by Group Captain A.K. Srivastava, at the end of it, what actually you wish to achieve or we wish together to achieve, and what we aim to learn. Young friends, ये 3 सवालों का एक बड़ा सिंपल सा आंसर है. At the end of the session, not this session I'm talking about, at the end of the guidance program, we would like to learn all the knowledge and the skills that would prove our employability as an officer in the armed forces by cracking the SSB interviews. And here I would say that A.K. Srivastava is concerned with the Psych technique. Friends, I'll give you my detailed introduction. I'm basically a hardcore student of psychology. I've written my book in which all the techniques have been touched, but I don't want to unnecessarily, in the session where I'm interacting with my students, I don't want to poke my nose into other techniques. I keep myself Psych technique, okay, very, very faithful to Psych technique. I'm not a trained GTO. Conceptually, the group testing technique is also a part of psychology, applied psychology. Behral. So you'll agree with me, I can see the face of Bhumika Yadav. I'll take Bhumika as the representative student. Bhumika, please tell me, do you agree with this answer or not? Unmute yourself and say yes or no. Yes, sir. Okay. So you agree that we wish to crack the SSB so that our dream career, that is to become an officer in the armed forces, is achieved. Okay. Now, we will see the flight plan. Actually, it is the Air Force terminology. Searching the suitable methodology. Just a couple of minutes back, friends, मैंने कहा था कि the generation today is having more knowledge, I mean, information at least, but the methodology is the one which is definitely needs a little bit of, very, very serious examination. Are we following the correct methodology? Okay. So anyway, in search of a suitable methodology for SSB preparations, okay, we'll be seeing who your mentor is. That means you must know me. Okay. There will be one part of the session in which we will be proving that nothing is better than something. We will review the conventional methodology with which we have started our preparations, or the thoughts that we encounter when we take the first step towards the SSB preparations. In that, we will be thoroughly examining these words, which I suppose everyone is so very familiar. That is what the OLQs are. What is the concept of positive or negative? At various places, through various sources, you get certain model answers, model stories. Some people give you the model sentences. They insist to practice these responses, and they ask you to work very, very hard. We will examine all these things, whether they are actually
proving productive or not. We will understand, therefore, the concepts of SSBs, what SSB is and what SSB is not. And let me tell you in today's session, what SSB is not. The time will be consumed when we'll be finishing this particular part, that is a critical examination of these terms. Shall we proceed? Okay, so know your mentor. Actually, friends, many people who have taken guidance program from me, or they have taken dossier evaluation sessions, that is a 2 hours of one-to-one situation interaction. Okay, they come out with something. They come out with the observation that, sir, your contents are very much different, and many a time they are opposing, or they stand in contradiction with whatever we receive from other sources. Frankly speaking, they are right. For example, there are many mentors, they say that, well, you have to, like, for a blank situation, or you may say the blank story, 12th story in thematic or perception test, many people advise you to go with a prepared set of, 3, 4, 5 stories. I trash them because it is absolutely against the basic ethos of testing. The purpose of blank story is therefore not understood by those people. In the situation reaction test, people say that quality is important. I say better understand the concept of what a reaction is. SRT is neither situation management test nor it is situation solution test. It is a test of reaction, so you must understand what reaction is. To sum up to cut long story short, you will find my instructions a little different from the beaten path. But if I say something, my contents are because of my qualification, because of my experience, and because of my exposure. I would like to give you my detailed introduction, and along, if I claim to be something, it is supported by the photographs and certificates. But why? Why I'm giving a detailed introduction of mine? Because, let me tell you, it's a matter of credibility. You must trust the prescriptions of only a credible mentor. If anybody has got higher qualification, more experience, more exposure, I will bow down my head in front of that person, and I will be the first person to say, follow that person's prescriptions, words. But if a person is not having the matchable, then I leave it to your judgment whether to follow me or go by the conveniences and the shortcuts. So here it is, Group Captain A.K. Srivastava. Somebody has given the iconoclast. This adjective is not mine. One of my own mentees has given. Okay. So I would say that I'm a student of psychology, and all of you can understand Hindi. Once upon a time, Gorakhpur University, which is now renamed as Deen Dayal Upadhyay University, a government university. I did my master's in psychology in first division in 1985. Even the words are written in Hindi or Devanagari. They have become wiser. As of now, the certificates are being issued in English only, so that the degree could be consumed at various places. So I am a PG in psychology. I'm an education officer, ex-education officer, of course. Okay, I don't claim to be a pilot or anybody, but yes, I was the part of many researches in the operational situation in collaboration with the DIPR. So here you can see I'm on the commissioning line, 87, December 1987, December 1987 was the date when I was commissioned. And this is the, anybody who has seen the Air Force Academy and the tarmac will bear out. This is a tarmac, and this gentleman is late Admiral Nadkarni, who has commissioned us. Okay. I would say with great pride that I am the youngest as far as this length of service is concerned, with which I have been made to undergo the psychologist course.
Okay. And immediately after that, I was posted to, halfway through itself, even before I could complete my practical phase, I was posted to Mysore, On the rank of pilot officer, you can see here, this pilot officer rank is no longer existence. You are commissioned on a higher rank. During our times, it was second lieutenant equivalent. That was the pilot officer. Okay, underwent psychologist course at DIPR with just 19 months of service. This is what generally I say in my introduction, that DMT from London, you can see interpersonal DMT system for Indian Air Force, DMT course, and the person who has signed here. Investiture was done in presence of the Air Force Chief at Hotel Maurya Sheraton. That's why the place is signed as here. But it is the course from Interpersonal London by the Chief Psychologist of Swedish Air Force, Dr. Thomas Newman. Now you can see underwent suicide prevention course. Friends, remember, suicide is very, very traumatic for the family, for the organization, for the society. And a person who is showing the tendency to commit suicide. Suicides are of two types, on the spur of it and a planned suicide. On the spur of it, you cannot do anything. But the person who plans a suicide can be intervened, this can be prevented by the critical observation of his behavior. You need to be trained to take into consideration or to take, to notice those behaviors. I underwent this as a wing commander from the Institute of Aerospace Medicine. Friends, you must have heard about this institution. If not, then I'll tell you. This institution is located in Bangalore, Indiranagar, and this has prepared us and oriented us. Oriented means, even the space travelers, like you must have heard about Wing Commander Rakesh Sharma, Group Captain Ravish Malhotra, and presently Group Captain Shukla. Okay. It has got the galaxy of the psychologists who train the selected people. I presented a paper on training enrichment, psychological enrichment of the training academies of the armed forces. It was an international conference hosted by the DIPR in Delhi. I represented the Air Force and presented the paper about the training methodology of the IAF. Then I registered myself for PhD course with Jayanarayan Vyas University, Rajasthan, Jodhpur. You understand that this is the government university. As a part of my research program, you can see here, this is to certify that Group Captain Arun Kumar Srivastava retired. Now you can make out, and this photograph is slightly matching other than the gray hair, which has appeared more. Research scholar, Department of Psychology, Jayanarayan Vyas University, Rajasthan, India, has participated and presented a paper. And now you can see location, Postgraduate Institute of Agriculture, University of Peradeniya, Sri Lanka. I went to Sri Lanka to present the paper. In 2018, 23rd to 26th, educational conclave, Afro-Asian conclave was there. Venue was Curtin University, and there I was invited to participate as a panel expert. And here you can see the certificates and the trophy for being the best panelist. This is the book which I've authored with the view that, well, the long-term preparation, this is a research-oriented book. This is not a guidebook, definitely for the success at the SSB interviewed. And you can see here, I've written especially suitable for repeaters, because only a repeater can appreciate the way he has been guided or stroke, whatever is there. Okay. This book is now, its second edition is available in Amazon with a different cover. Anyway, doesn't matter. You may search in Amazon, Aham Avam Vayam, okay, and you'll find this. Now, professional and career landmarks. I was psychologist member of 2 Air Force Selection Board, Mysore and Varanasi. And of course, this was there where I was posted. I've served almost on every selection board, including occasionally with the Army also I was attached. Counselor and senior directing staff means the instructor at Air Force Academy, not once, but twice. Headmaster and officer commanding of NCC units of Sainik Schools of Imphal and Kapurthala. Post-retirement, which I have taken voluntarily in 2016, I was psychologist and personality trainer on contractual basis, Sainik School Rewari,
for 2 years, and for 3 years, Maharaja Ranjit Singh Armed Forces Preparatory Institute, Punjab. So, young friends, these are my professional and academic credentials. And as far as exposure is concerned, I'm a very avid traveler. Okay. Almost half the Europe I have traveled. Okay. Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Dubai, vagara, vagara. It's okay. I mean, just some of the, photographs. Okay. So these are my academic, professional, and exposure certificates, must I say. Now, anybody who is higher in qualification experience must be respected for his views. Otherwise, I don't want to come across, or I don't want to put myself against or pitted against the person who is not having the matchable qualification. Call it that this person is high-headed or whatever is there. Okay, doesn't matter. Friends, whatever content of my training methodology, whatever the content of my book, they are governed by two sets of thoughts I would like to share with you. Actually, as I've told you that SSB training has been oversimplified, which has given us more confusion rather than clarity. Friends, remember, your generation is in a hurry, I know. You want quick fix solutions. But there are certain things, there is an approach which is evolutionary approach. There is an approach which is revolutionary approach. Revolution can undo certain things. But for building up certain things, for developing certain things, you need evolutionary approach. So you must examine these two thoughts. What therefore will be more suitable for our SSB preparations? First thought, friends, is borrowed garments never fit well. Young friends, almost daily I'm engaged in, and some of you who have taken not only the guidance, but their doses have also been evaluated. And I've told these words, not in, these thoughts, not in these many words, but other words as well, that you must not depend on any other mentor, any other self-help group for the content of your responses. There's an Italian proverb, borrowed garments never fit well. If you want to present yourself like a smart, handsome, hunk young man, or young girl, the garments have to be your own. Borrowed garments don't fit you well. Understand the essence of it. Now, second thing is, eliminating one weakness is better than adding one strength. Friends, today, if I have to sum up my preparation methodology and contents, I hit basically at the undesirable things and request you to please get rid of these undesirable things rather than, carrying on with them. But it has to be a conscious evaluation. So these two thoughts, they have driven me to believe that the SSB preparations must be slow, steady. And this slow and steady does not mean that there has to be a formal slow and steady content. You can do it yourself, but the root of it is the realization. आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि कहां पर क्या चीज गलत है और कहां पर क्या चीज सही है. जहां आपने रियलाइज कर लिया, फिर आपको प्रैक्टिस, आपको हार्ड वर्क करने की कम जरूरत पड़ेगी. लेट अस से अगर आपसे किसी ने बोला कि आपको इस सिचुएशन में सत्य बोलना, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ इन एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन. अब आप सच क्यों बोलेंगे जब आपको
सच की वैल्यू, सच बोलने की वैल्यू, सच की वैल्यू नहीं, सच की वैल्यू तो मेनी टाइम इट इज वेरी वेरी बिटर। सच बोलने की वैल्यू और सच बोलने का मोटिवेशन अगर आपके पास है, फिर काफी है। देन यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग लाइक नो वर्किंग हार्ड टू लर्न टू हाउ टू स्पीक टू ट्रूथ। Remember, at the SSBs, you are going to showcase your behavior pattern, your thought patterns, your value system. You are not going to present something which is a learned content which you receive, retain, and reproduce. All right. Once again, I'm coming back to the same question which I asked right in the beginning, that what is the aim of our interaction? What do we want to learn? We want to learn, okay, all the knowledge and skills in the psych technique to prove our worth as a candidate or to prove our, the employability qualities as an officer of the armed forces. Now, young friends, the term SSB. Many of you must be quite excited. Finally, after this lot of blah, 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 finally the term SSB has come. I request you, hold your horses. Now, when we come across SSB and फिर देखते हैं कि कौन इसमें SSB, कौन पास करता है, कौन नहीं करता है, किसका सिलेक्शन होता है, किसका नहीं होता है. So then we find ourselves at the crossroad. देखिए मैंने क्या लिखा है. Cracking SSB is a mystery. SSB में सफलता बहुत लोगों के लिए एक बिल्कुल ही एक पहेली. It is enigmatic. क्यों? There are certain unpalatable facts. हम हजम नहीं कर पाते उनको. क्या है पहली बात? तो सिलेक्शन रेट इज सो वेरी लो, 2 to 7%, and occasionally the entire batch is given. Thank you very much. Better luck next time. Many people repeatedly they face this kind of a situation. There's nothing like a transparency or feedback, no re-evaluation. And here there's another, you may say, it's a fact that candidates evaluation is having a lot of subjectivity. It's a perception based rather than an instrument or well-defined steps based. There's nothing like a mathematical equation to solve and you have done 10 steps fine. Okay. You can claim anything. It's all perception based. And there are many places, it's not only in SSBs, remember. You must have seen this movie. कौन सी movie थी यार जिसमें IPS था, वो 12वीं pass fail, something like that. You know, this struggler, after a lot of hard work, finally he cracks the written examination. When he goes to the UPSC, the interview venue, he was told that this particular board, अरे बाप रे बाप, इतने देर के बाद तो बेचारा किसी तरीके से पास हुआ और उस खुर्राट आदमी के बोर्ड में पड़ गया. That person is supposed to be very, very खुर्राट, biased, unreasonable, asking many, he enjoys the candidates being put in dock. होता है. Everywhere it happens. And more so in the SSBs. So, क्या करेंगे? Take it with a pinch of salt. You cannot do anything as far as these ugly realities are concerned. But I would say that for these ugly realities, to a very great extent, we ourselves are responsible because we don't understand the system. Or our understanding of the system is only at the level of maybe information or at the most some knowledge. Remember, whenever we are in educational setup, whatever an instructor passes on to you, कोई भी इंस्ट्रक्टर जो है ना आपको 3 चीजें पास ऑन कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज द नेसेसिटी, वट एवर इज द कॉम्पिटेंस. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज द नॉलेज एंड थर्ड इज द कॉन्सेप्ट. इंफॉर्मेशन आती जाती रहती है, नॉलेज थोड़ा स्टेबल रहता है, एंड कॉन्सेप्ट्स दे हैव गॉट
the greatest shelf life. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, after that information may come and go. Doesn't matter. You will be in a position to handle the contradictory informations applying those filters. बहरहाल आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये अगली रियलिटीज हैं. ओके, अब ये रियलिटी मैंने कहा ना, बहुत कुछ हमारी अपनी क्रिएटेड सिचुएशन. एक बहुत बड़ा अगली फैक्ट एक ये भी है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट बात एसएसबी, इतना इंपॉर्टेंट जिसका रिजल्ट होता है, जो आपके लिए, कंट्री के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबीज, is not having any kind of guidebook, any hint from any official source. अगर आपके पास है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. At least till today I am not aware that DIPR, Armed Forces, Services Headquarters or Selection Boards or any officially recognized source has ever shared. No, है ही नहीं, to the best of my knowledge. So अब क्या होता है कि your generation is seeking clarity. Information की बात है, you are having information flowing from all corners. हमारी जनरेशन में एक साइकोलॉजिकल टर्म होता था जिसको हम लोग क्या कह सकते थे, एक चलिए मैं एक वर्ड लिख करके आपको, एक वर्ड क्या है उसको एक जुमला कह सकते हैं. टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी. देखो, जैसे जैसे नॉलेज और इंफॉर्मेशन बढ़ती, यू हैव डिकोडेड मेनी थिंग्स, सो वी वुड लाइक टू बी क्लियर अबाउट मेनी थिंग्स. ओके, अब क्या होता है कि यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर वेरियस मेंटर्स, वेरियस पीपल, ओके, कोचिंग एकेडमीज वगैरह वगैरह. एंड जो मैंने बताया, अभी एग्जाम्पल दिया कि मैं कुछ और कहता हूं, कोई बंदे उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट कहते हैं. Multiple sources, multiple mentors, multiple beliefs that may be popular. Let me tell you, some of the beliefs, they are very, very, they have sold like hot cakes. But they are conflicting, they are contradictory. And still they are taken to be gospels, let me tell you. And here, friends, most of the candidates, they flunk not because they lack the talent or the merit. I know every failure, every time not being recommended, that gives you a blow to your confidence. But please remember that it is not because you lack the merit or the talent. For sure, you are following something which is, I won't say even wrong. I simply say it is inappropriate methodology of preparation, certain conceptions, misconceptions, and you are following certain popular beliefs. Many times these popular beliefs, they are so very difficult to even comprehend. Let us say किसी बंदे ने, 3-4 लोगों ने मुझसे कहा अभी very very recently, sir, my mentor has told that there has to be consistency in your TAT, WAT and SRT. मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात. If you are a well integrated personality, if you are not a schizophrenic personality, a split personality, definitely there will be consistency. But एक बात आप बताएं कि TAT जो unconscious mind के contents को निकालता है, which is aimed to fish out the contents of your unconscious mind, that contains those motivations and instinct, those things and needs which energize your behavior, sustain your behavior. Or WAT, which is having the regulatory mechanism which operates at the subconscious level. How can there be a consistency? ये उनसे जरूर पूछिएगा. Yes, as a psychologist, I'm not surprised. लेकिन अब उन्होंने उनसे पूछा नहीं, कंफ्यूज होकर के आ गए और मुझसे पूछे. So you are carrying, multiple popular beliefs. अब तो थोड़ा कम हो गया है. Fortunately, I don't know whether it's with me only or whether it is, I'm not having access somehow to those people.
एक जमाने में किसी ने छुतरी छोड़ी, आपका एसडी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ शेयर किया जाता है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया विद वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स, एक्स प्रेसिडेंट्स ऑफ जालंधर बोर्ड, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक ग्रुप कैप्टन आर आर लाल, जो कि 2 बार जीटीओ रह चुके थे, मैं खुद। तो साइक ग्रुप कैप्टन आर आर लाल जीटीओ, और जनरल एस के सिंह। मैंने कहा सर हम साथ में बैठते हैं और इन कैंडिडेट्स की क्वेरीज को हम जरा हैंडल करते हैं। वो कहते हैं कि माय एसडी इज बीइंग शेयर्ड विद इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और 2-4 लोग उसके एविडेंस भी देते हैं। सर उसने वही सवाल पूछा जो मैंने एसडी में लिखा था। अब वो कंफ्यूजन लेकर के घूम रहा है, विच डजंट हैव यू आर हैविंग योर, मतलब क्या मैं बोलूं, दीज कंफ्यूजन्स आर पिगी राइडिंग यू, ओनली मेकिंग योर माइंड हेवियर। So that's what it is, friends. My conclusion. Grant me my conclusion. I have given you enough of my association with the system, either as an insider or after coming out of the service when I'm sending the people inside the system. That you are following the misconceptions and popular beliefs and inappropriate approach. एक बार अगर आपने उस अप्रोच को सही कर लिया तो लेट मी टेल यू, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन। एक प्रोवर्ब है ना, वो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। फ्रेंड्स, एक क्रिटिकल ऑडिट, ऑडिट समझते हैं आप लोग ये वर्ड, जैसे होता है ना, जैसे ऑडिटर होता है वो एग्जामिन करता है कि आपने एक्सपेंडिचर सही किया कि नहीं किया, सही हेड में, मतलब उसका हिसाब किताब एक्सपेंडिचर क्या एज पर द रूल्स है कि नहीं। इस पूरी प्रोसेस को ऑडिट कहते हैं हम लोग। ऑडिट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग आवर ओन, व्हाट वी हैव डन, which we should have done, and what we have done which should not have been done. तो इसको ऑडिट बोलेंगे हम लोग। A serious and critical audit therefore is needed for all the elements which are in an educational system. मैं इसको एजुकेशनल सिस्टम ही बोलता हूं। जैसे मैं अगर मेंटर हूं, आप उसके रिसीवर हैं, we both of us have got a role and a stake in the system, and there is a content which the instructor passes on, there is a behavior which is ultimately needed to be imbibed by the student. हम इन तीनों लोगों की एक ऑडिट करेंगे। एज अ स्टूडेंट आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, क्या नीड आपकी है। एज मेंटर क्या मेरी कॉम्पिटेंस है, और वो जो कंटेंट है जो आपको दिया जा रहा है उसकी कितनी एफिशिएंसी और एफिकेसी। लेट अस डू इट, फिर मैं बताऊंगा। पहले लेट मी टेल, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि मैं यहां बेसिकली उन बातों को मैं हिट कर रहा हूं जो कि आपके दिमाग से निकलनी चाहिए। जो मैंने बोला था, एलिमिनेटिंग वन बैड पॉइंट और मिस्टेक इज बेटर, 2 बैड पॉइंट्स आर बेटर देन एडिंग 1 गुड पॉइंट। मेरा ये प्रेमाइज है, मेरा इस समय बड़ा फर्म बिलीफ है फ्रेंड्स, कि अगर हम इन नॉन प्रोफेशनल बिलीफ्स को हटाते चले, द फर्स्ट स्टेप विल बी टू एरेडिकेट आवर माइंड, टू फ्री अप आवर माइंड। जैसे होता है ना कि किसी पर्टिकुलर किसी ऐप की, है ना, मेमोरी फुल हो जाती है, या कभी किसी मेरे को अभी उन्होंने बताया, जीमेल ने बताया कि नो मोर स्पेस इज अवेलेबल देयर, तो हम क्या करते हैं, वी फ्री अप सम स्पेस, कुछ चीजें हम मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स, आवर माइंड देयरफॉर नीड्स टू फ्री अप itself from the unprofessional beliefs. They are popular, all right, but they are not doing any good to us. तो आगे बढ़ते हैं। एंट्री लेवल बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एस्पिरेंट्स। हम क्या उम्मीद लेकर के जाते हैं, हम क्या लेने जाते हैं किसी मेंटर के पास, किसी कोचिंग एकेडमी के पास, किसी सीनियर के पास, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। हमें क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, ये इसका ऑडिट बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, रिसोर्स पर्सन कौन से हैं। और एक बात मैं बहुत साफ साफ बता दूं कि साइकोलॉजी की टेक्निक ऐसी है जिसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होता।
It is the situational appropriateness of your behavior that gives a lot of input to the psychologist for the assessment of your qualities. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है, आपको ये देना है, आपको ये नहीं देना है. It is not the content training, it is the process training which is important in psychological technique. Very unfortunately, lot of people, they give you the contents. ऐसी पिक्चर आए तो आप ऐसी स्टोरी लिख देना, ये सिचुएशन आए तो ये लिख देना. They try to overweigh your personality. अभी उसके बारे में बात करते हैं. तो the credibility of mentors, इसीलिए मैंने इतना लंबा अपने बारे में मैंने कहा. उसका नीचे की लाइन आपने पढ़ा होगा, trust the prescriptions of only a credible mentor. आगे the training, content and methodology, तीन चीजें हैं. जैसे मैं यहां पर हूं, आपसे मैं कुछ, आई एम ट्रांसफरिंग समथिंग, यू आर रिसीविंग समथिंग, एंड देयर इज द कंटेंट व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू द प्यूपल. ये तीनों चीजों का ऑडिट बहुत जरूरी है. और फिर हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे कि की एसएसबी फिर क्या है. अगर ये चीजें हैं तो क्यों है, ये चीजें नहीं है तो क्यों नहीं है. Why they should be rejected from our minds. तो young friends, सबसे पहले, a candidate, you are the first and very, very important stakeholder in the system of, or the ecosystem of training. Friends, I'm sorry, please, मुझे माफ कर देना, हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगता हूं. I found most of the students, most of the aspirants ignorant and confused about the system, which way this system is, or which way this coaching should be similar or different than any other coaching centers. I mean, any other coaching for other jobs. ये मैंने लिखा, देखिए, ignorant about the system. हम सोचते हैं कि शायद जिस तरीके से हमने आईआईटी की कोचिंग की, प्री मेडिकल की कोचिंग की, क्लैट की कोचिंग की, या आईएएस की कोचिंग हम करेंगे, कुछ वैसा ही है यहां पर. देखिए, ध्यान रखिएगा, वो कोचिंग्स ऐसी हैं जो एकेडमिक सब्जेक्ट बेस्ड कोचिंग है. वो आंसर सेंटर्ड कोचिंग्स हैं जिसमें आपको आंसर्स लिखने, फिक्स्ड आंसर्स हैं. अगर मैं आपसे कहूं, लेट अस से कि व्हेन ए सिंपलेस्ट ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चंस, व्हिच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट. आप यहां पे 35 लोग हैं, मतलब 35 लोग, मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो इनको, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, that we have gone there not to understand the system, we have gone there for getting some tips and tricks. मैंने बहुत पहले से कहा था कि मैं आपको इस समय केवल सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी टेस्ट, एनी टेक्निक. बट नहीं, अब देखिए पेशेंस निकलता चला जा रहा. सो यू आर द मोस्ट, I would say, ignorant person. You should be very much aware what must you get there. Who is to trust as the mentor? Okay. आगे बढ़ते हैं. The academic mindset and misplaced expectations. मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक श्रीमान जी से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई. अल्टीमेटली मैंने यही लिखा था कि डोंट ट्रिक द सिस्टम, बी वर्दी ऑफ द सिस्टम. तो बंदा एक कोचिंग सेंटर चलाता था, मेरे से भीड़ पड़ा, सर इसमें बुराई क्या है अगर सिस्टम में घुस गया. मैंने बताया, देखो, यू आर नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड बाय द सिस्टम अलोन. योर एक्चुअल टेस्टर विल बी द एनिमी इन द बैटलफील्ड. देयर यू विल बी सक्सेसफुल ओनली बेस्ड ऑन योर क्वालिटीज एंड नॉट बाय शो ऑफ क्वालिटीज. You will be progressing, you will be happy in the system, you will be performing in the system based only on the qualities, not by tricking the system. कि किसी तरीके से ये कोई सरकारी नौकरी क्लर्कों वाली नहीं है कि आप किसी तरीके से सिस्टम में घुस गए और उसके बाद things will be absolutely fine and honky dory for you. जो लोग इस माइंडसेट के साथ सिस्टम में घुसे हुए हैं, they are the most miserable people in the system.
ये कहानियां हम लोगों के पास नहीं आती हैं, लेकिन मैंने अपनी किताब के पहले चैप्टर में मैंने एक रियल इंस्टेंस दिया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, शैल वी? यस, you go there to learn some tricks, somehow secure entry. Appearance should be the priority. जैसे कुछ बाकी टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स में कहते हैं एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। माय डियर सर, यू आर गोइंग टू बी examined by three techniques. They will be dissecting you open to your cellular level. So just be there as you are rather than trying to appear. But you must understand it that appearance in our place is having no value. Being is the value. और इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बंदा या कोई बंदी बहुत साइलेंट, नॉन इंटरैक्टिव, सडनली दैट पर्सन इज सिलेक्टेड और फिर कहते हैं माय गॉड लुक एट दिस, ये बंदा या ये बंदी कैसे सेलेक्ट हो गई? एंड अनदर पर्सन हु वाज अपीयरिंग वेरी स्मार्ट, वेरी वोकल, फिर कहते हैं वो बंदा तो सिलेक्ट हो गया, जरूर इसकी पत्ती होगी। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन दैट वी गेट। ओके, अब आते हैं कि द सोर्सेज ऑफ सच मिसप्लेस्ड बिलीफ्स कौन से हैं? XSSs. Friends, let me tell you, in the Psych technique, I have seen and I can count, number of people who are GTOs, who are interviewing officers. They are trying to poke their nose. Rarely you know it. Everybody goes with a DIPR certificate, and you never even ask whether DIPR is given in the failed certificate or the pass certificate. Service officer, since every service officer himself has gone through the system, so the person feels that he has got a right, he has got a stake or guidance, guiding the people. So-called successful candidates, अरे जबरदस्त, दिल्ली में, गुड़गांव में, not possible to authenticate. This is an ugly fact. Experienced SSB aspirants and self-help groups, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हु विश टू मिंट मनी। अभी मुझको किसी ने, श्रीमान जी ने मेरठ में बुलाया पॉडकास्ट के लिए। वो पॉडकास्ट कभी आया, रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन कभी आएगा नहीं क्योंकि मैंने धज्जियां उड़ा दी थी। एंड दिस गाय वाज डेफिनेटली a technology expert only, has got nothing to do with SSB. कोचिंग सेंटर चला रहा है, टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है, अब दे क्लेम टू बी सो मेनी many hundreds and thousands and lakhs of followers. और लखनऊ में तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनका एसएसबी से, ऑफिसर्स कैडर से कुछ लेना देना नहीं है। Commercially they are successful. So must be the case in all. So these are the people. That's the second point, as I've told you. As a candidate, you go there to get some tricks and tips, and these are the people available to you. और फिर वो क्या करते हैं? Now coming to the content of it, friends. So SSB में आपको क्या चाहिए? SSB training oversimplified the popular beliefs. The moment you go there, the moment their batch starts, और बाय द वे मैंने कम से कम 15-17 कोचिंग एकेडमी में मैंने काम किया, और वहां पर जो सो कॉल्ड मुझे कहा गया कि यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्टर, ठीक, everywhere they begin with a list of 15 OLQs, 15 qualities called at the officer like qualities. We will audit them. रुकिएगा, मैं I'll appeal to your patience. Okay. Then overemphasis on being positive. अभी 3 दिन पहले मैं किसी की डोजियर इवैल्यूएशन का सेशन में ले रहा, when I'm told to fine tune the सिस्टम, उसका जो कंटेंट, क्या कहते हैं, सर ये तो नेगेटिव हो गया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात, नेगेटिव हो गया तो हो गया। Overemphasis on being positive. We will examine what is positivity, what is not positive.
and which way it is beneficial. Model stories and answers, and then emphasis on hard work. Now the question is, did it really pay? Almost everywhere you are being given the same set of beliefs to follow. But did it work actually? This is where I say no. Reason number one, OLQs are merely situational. देखो दो तीन बातें अब मैं OLQs के बारे में बताता हूं. First of all, remember OLQs are not the psychological qualities, they are the behavior. For example, जैसे एक first factor, first quality, they call it effective intelligence. Effective intelligence क्या है? फिर वो definition बताएंगे कि effective intelligence is your ability to deal with the problems or the issues of day-to-day life. In psychological terms, we call it as the problem-solving behavior. It is the behavior and not the quality. इस behavior के पीछे there are multiple qualities. Let's say perception of the problem. Let's say analytical ability. Let's say grasp of the intelligence. So work on these rather than the behavior. Why? So OLQs are what? They are the situational manifestation of your qualities. अभी मैं आपको एक दिखाता हूं, एक स्लाइड दिखाता हूं, आप समझेंगे उससे. दूसरी बात, OLQs are not for you. Remember, OLQs are for the assessors. There are three techniques. The three techniques, they observe you for different dimensions of behavior. Sometimes it is written behavior. Sometimes it is oral behavior. I mean, you understand, verbal or oral. Sometimes it is verbal, oral, written, action. Psychologist sees your 16 pages of written responses. Interviewing officer is training his ears for the contents, and he watches your body language, your, the various emotional things. Contents, of course, which you speak out. And the group testing officer considers your multiple behavior, individual behavior, group related behavior, action, sometimes the written, sometimes the spoken, indoors, outdoors. Now, all the three gentlemen are examining you for the same qualities or reference. That is, they are testing your employability, okay, as an officer. तो अब आप बताइए, how they are going to compare their notes? So OLQs are the terms with which they, share their observation about your merit. अब OLQs को, if you take it for your own development, it is absolutely fine. प्रॉब्लम क्या होती है? सम पीपल दे मेक यू ओवर कॉन्शियस. इसमें ये क्वालिटी आपको दिखानी है. Friends, take it. This is where either the instructor is confused or he is making it oversimplified. Remember, you cannot repeat, you cannot consciously, deliberately, or pretentiously, you can put those qualities into your action. Not at all. OLQs are situational. For example, courage. To have the the display of courage, manifestation of courage, you need a danger. No. Unless there is a danger, how can you show the courage? Tell me. Can you keep on saying that I am very, very himmati person है, बहुत वो आदमी हूं? अरे भाई, जब आपके सामने सिचुएशन होगी तभी तो करेज का क्वालिटी आएगी. Confidence. Unless there is a tough situation, difficult situation, how the quality of your confidence will come out? Determination will come out unless there is an obstruction. So your OLQs are situational. They don't exist there as something, No, they are the situational manifestation of your other qualities. एक बात मैंने बताया ना, assessor's perspective, there are non-tangible many terms. जैसे liveliness है.
How will you show your liveliness in psychological technique? They are the things which are to be felt only. It cannot be really reflected. OLQs are the behavioral manifestation rather than the qualities. अब आप अगली स्लाइड देखेंगे तो आपको OLQs का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ये देखिए. This is your general personality. Ingredients are cognitive abilities, emotional management, motivation, life goals, experience, practice learning, socio-cultural values, actions, energy. There are multiple things. These are your qualities, friends, and they are manifesting themselves in certain situations when you manage certain situations. So you are put in those situations in a simulated way. Don't be unduly conscious that you have to show this quality, and you don't have to show this quality. This is positive, this is negative. OLQs. Now comes the second point, that is positive and negative. Friends, positive and negative. Another thing, sorry. I would like to tell you, I'd like to apprise you about the OLQs, yet another thing. When somebody tells it's OLQ, तो आपको लगता है कि these things are exclusive to the cadre of officers. अब मेरे कहने से आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए. Go on the site of Army, official website of the Army. उसमें एक वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, एक सेक्शन मिलेगा जिसको कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स. ड्रॉप डाउन मेन्यू में आइए उसके. One gallantry award, the highest gallantry award is the Paramveer Chakra. I hope you know it. I'm sure you must be know. How many Paramveer Chakra winners are there in our country so far? There are 21. Kitne? Yes, Shaktidev Prasad ji, your face is nicely now visible to me. How many Paramveer Chakra winners are there in our country? 20 approximately. Number approximately. Not approximately. It is exactly 21. 21. Exactly 21. Or is 21 में, by the way, the thing which I wanted to, because see, it's the since highest, so it is given to a very limited number of people so far. बाकी महावीर चक्र और कीर्ति चक्र और अशोक चक्र और है ना वीर चक्र are numerous, incountable. Out of these 21, can you believe it? Do a little bit of research yourself. Now I'm exhorting you, I'm advising you. There are only 12 officers and remaining 9, they are ranging from Sipahi to Subedar. अच्छा, यहां तक तो ठीक. अब आप थोड़ा सा उनका विकिपीडिया कर लीजिए. For what they have been recognized and honored with this highest gallantry award. For what deed, for what action, for what particular move which they have shown in the battlefield. तब आप देखेंगे कि most of these qualities in the list of OLQs have been displayed by officers and men alike. अब आप बताइए मुझे, how much justified therefore it is to call it the OLQs? Any answer? बोलो भाई. हाँ. So definitely we need to go a little, dig ourselves a little deeper. अब जैसे एक मकान है, there is a house, let us say, उसमें एक दीवाल है. Now दीवाल is not the unit is the brick. So you have to go to the bricks level, cellular level. जैसे एक body होती है ना, body में क्या होता है कि different systems are there. Systems में क्या होता है, different organs are there. Organs में क्या होता है, different tissues are there. And tissues are there, which are having cells.
You have to understand the cellular structure and not the body structure, sir. If you have to understand the system and if you have to understand what the system needs from you, then go for its cellular level. I hope you are understanding it. Okay. Now comes the positive and negatives. There are instructors, let me tell you, who cannot talk even this 2 sentences without these words, positive and negative. I don't know kahan se ye cheezein aa gayi hain. Remember that you are going to be employed for tackling the negativities. You have to fight the enemy and not your friend. Friend is positive. You will be fighting the stress, the problems, the obstructions, the challenges. All are negative, damn it. तो क्या होता है कि कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव को बोल करके इतना ज्यादा फैला देते हैं साइक टेक्निक में that you start applying the filters and the channels you don't want to see the realities. कितनी पिक्चर्स ऐसी हैं, मैंने कितने एग्जाम्पल दे करके अपने यूट्यूब वीडियो में बताया. एक पिक्चर है, एक बंदा ऑब्वियसली वो साइड में ऐसे करके हाथ करके खड़ा हुआ है. आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि व्हाट मेक्स अ पर्सन शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को आप अगर ऐसे करके देखेंगे तो अब आपके पास ये होना चाहिए कि बंदा कंफ्यूज है, डिप्रेस्ड है, इतना कम से कम होना चाहिए. लेकिन जब किसी ने कह दिया है नेगेटिव है तो आप कुछ और सोचने लगे, उसमें पॉजिटिव ढूंढने लगे. डोंट डू दैट. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल एड लॉट ऑफ अनवांटेड फिल्टर्स एंड चैनल्स. देन यू विल बी इन द डिनायल मोड. मैं दिखा रहा हूं पिक्चर्स में कि एक बंदा चाकू लेकर के दूसरे को धमका रहा है, तो आप उसमें कहानी लिख रहे हैं कि इट्स अ प्रैंक. Yes, people have written like this. It's a prank. Actually, it's not threat. No, sir. This positive and negative, मेरे जो लोगों ने मुझसे प्रोग्राम लिए हैं, गाइडेंस प्रोग्राम, पहले दिन मैं कहता हूं कि अब से लेकर के टिल द टाइम वी आर फॉर्मली एंड ऑफिशियली सेपरेटेड, वी विल नॉट यूज दीज वर्ड्स. कसम परेड जैसे होती है ना, इन्वेस्टिचर सेरेमनी में कहा जाता है कि हम आगे ये करेंगे नहीं करेंगे. मैं साफ साफ कहता हूं कि इसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं बोलेंगे, और जो बोलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा. अरे यार, एक टीम है, यू आर ऑपरेटिंग इन अ टीम, यू आर अ कैप्टन ऑफ द टीम. You mean to say that your subordinates, they have got the liberty of being positive or not to be positive? The entire team is to have one single mindset. That's it. You are as it is, happy, healthy, well educated, well adjusted, meaningful individual. अरे आपने किसी ने एसएसबी क्लियर की, किसी ने नहीं की. That doesn't mean that you are a failure person. You are already a person with a positive approach in life. You need not be especially conscious about that. अगली बात पर आते हैं. Model answers and model stories and model sentences. Young friends, if somebody is giving you a model answer, that means he's commanding your personality. He's giving something which is a product of his imagination and his choice, and you are going to unnecessarily chipkaw it on your personality. Borrowed garments never fit you well. Remember that in psychological technique, कहीं से आप लेकर के तो आ सकते हैं, but in the group testing technique and in the interview technique, because these techniques, they have got further questions. इंटरव्यू वाला आपसे सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कई तरीके के सवाल पूछ करके पता कर लेगा आपका लेवल क्या है. इसी तरीके से ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक में इंडिविजुअल टास्क, ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, आपका दे विल डाइसेक्ट यू ओपन, सर. और साइक टेक्निक में आप कहीं से उधार बाड़ी लेकर के आप आ गए हैं, आप क्या समझते हैं कि यू विल बी एबल टू फूल द सिस्टम? In fact, let me tell you, many of the candidates lost their chances because of this.
अभी मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर करीब हफ्ता भर पहले मैंने एक वीडियो डाला था. If you want to get selected by the psychologist or recommended by, you must write the stories, your own stories on the projected picture. Not like that कि किसी ने बता दिया कि इसका कोई सिलेबस है, इसकी कोई लिस्ट ऑफ टास्क. So if you are going with the list of tasks and the list of ways to achieve the task, I'm sorry, you are befooling yourself. You are putting an acid to the roots of your own prospects. Your mind becomes rigid. अब एक सिंपल सी बात करते हैं. आपको किसी ने बता दिया कि एक गाड़ी है रेड कलर की पेंटेड, जिसमें घंटी बज रही है और गाड़ी जा रही है, तो तुरंत आपको देखना है कि कहां पर आग लगी हुई है. यानी घंटी बजना और आपका भागना. अब आप किसी लोकेलिटी में गए और वहां पर किसी स्कूल की घंटी बज गई छुट्टी में, तो आप भाग पड़ेंगे क्या? घंटी बजना इज द सेम. या कहीं चर्च से घंटी की आवाज आ रही है, मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है, तो आप भाग पड़ेंगे क्या? विल यू टेक स्टिल एस? इसलिए जजमेंट जरूरी है, जो वो आपका अपना होना चाहिए, ना कि किसी का मॉडल आंसर. प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क. मैंने अभी थोड़े देर पहले मैंने बोला था कि जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि आपको सिचुएशन में सच बोलना है, डू यू रिक्वायर प्रैक्टिस? लेकिन ना. देखिए, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क हेल्प्स वेयर द कंटेंट टू बी लर्न्ड इज muscular skills. Muscular skills, let us say you are learning how to drive a car, you are learning how to, play on a musical instrument. Where your psychomotor behavior is learned, definitely the practice helps you. But cognitive, no sir. मैं आपको एक वर्ड कोई दे दूं जंबल करके, आप एक बार में, वो एक बार कब आएगा? द फर्स्ट ट्रायल इटसेल्फ यू विल बी इन अ पोजीशन टू डिकोड दैट. आप मेहनत करते रह जाइए. अगर आप चाहें तो एक वर्ड मैं अभी दे सकता हूं राइट नाउ, बट ठीक है, इट्स ओके. देयर आर 34 पीपल, आई डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम. बट बी कन्विंस्ड फ्रेंड्स दैट whenever your realization is needed, at that time hard work doesn't matter at all. Mona Lisa painting, was it done with the hard work or it is the work of creativity? The answer, you know it. And therefore, friends, we need to recast the look on your preparation strategy. Now, OLQs, positive approach, model answers, hard work and practice. इसमें क्या चीज, which is what is badly missing? Remember that such an approach is not connected with the organizational aims and job profile of an officer. क्या आपने कभी सोचा है, ओके, कि आप आर्म फोर्सेस में करेंगे क्या इस सिस्टम में? ये जो सिस्टम है जिसमें जिससे एनडीए का सिलेक्शन होता है, जिससे ग्रेजुएशन का सिलेक्शन होता है, पोस्ट ग्रेजुएट्स का सिलेक्शन होता है, वेटनरी डॉक्टर्स का सिलेक्शन होता है, लॉयर्स का सिलेक्शन होता है, इंजीनियर्स का होता है, एजुकेशन ऑफिसर्स का होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड. व्हाट इज कॉमन? क्या करेंगे आप? एक्चुअली यही चीज जो है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिपार्चर. यही चीज आप मिस करते हैं. You start picking up the baton where half the distance is traveled by somebody else. और फिर उसको हम विदाउट एग्जामिनेशन हम सोच देते हैं कि यही टोटल डिस्टेंस है. नो सर, टेक इट इन द पर्सपेक्टिव. You must examine yourself with the open eyes. What you're going to do in the armed forces, what will be your job profile? आप सही से बताइए, किसी कोचिंग सेंटर में किसी मेंटर ने, किसी यूट्यूबर ने बताया है कि आप क्या करेंगे आर्म फोर्सेस में? टच योर हार्ट, डोंट गिव मी आंसर.
बट डोंट यू रिक्वायर दिस आंसर फर्स्ट कि वाई एट ऑल? अगर कोई कहता है कि पॉजिटिव होना चाहिए तो क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? A society must teach you to inquire rather than obedience, yaar. Obedience is the hallmark of a follower, not the leader. आप OLQ तो आप सीखते हैं, but do you know what will be your status? You will be a leader. You will be leader primarily in the combat. और आप फॉलोअर बनकर के किसी फॉलोअर मेंटेलिटी के साथ आप लीडर बनेंगे? बताइए. Why don't you examine it? Why don't you inquire it? अब मैं आपको बता रहा हूं कि what will be your job profile as an officer in the armed forces. एंड उसके पहले आर्म फोर्सेस हैं क्या? अगर आप यहां पर 33 लोग हैं, अगर मैं सभी से पूछूं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो क्या बोलेंगे? कि आर्म फोर्सेस दे प्रोटेक्ट द नेशन अगेंस्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट. पहली बात. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, दे आर डिफरेंट मीडियम्स हैं. लेकिन पहले आप जानो तो सही कि आर्म फोर्सेस में आप जाकर के करेंगे क्या. आज हम सिर्फ दो बातें करेंगे अभी, बिफोर वी क्लोज द सेशन टुडे. दैट इज, what are the armed forces and what is the cadre of officers. Then you will be in a position to definitely relate many things in my subsequent lessons, provided you continue with. Behral, let me come back to my slides once again. अच्छा, मजे की बात है कि आप लोग फॉलो वही करते हो जो आपको सूट करता है. मैं राइट फ्रॉम बिगनिंग मैंने कहा कीप योर थिंग्स ओपन, कैमराज ओपन. सबके सब ठंड मार करके बैठे हुए हैं. क्या आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं हैं? ऐसा कौन सा काम कर दिया भैया कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए आप लोग? दिस इज द मेंटेलिटी, टेल मी, ऑफ द यूथ, कि यू आर लुकिंग फॉर योर ब्लडी कन्वीनियंस और यू प्री डिसाइड व्हाट यू नीड. है ना दोस्तों? इसी मेंटेलिटी से यू गो विद प्री. हमें यही चाहिए सर, ज्ञानवान कुछ नहीं चाहिए. रिमेंबर, इट्स साइकोलॉजी. ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जहां गुरुजी कोई वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला और वही आप लेने जाते हो इंसिडेंटली, मच एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेलफेयर. आप फॉलोअर मेंटेलिटी, कन्वीनियंस की मेंटेलिटी दिखा करके अगर आप चाहें कि सिलेक्शन बोर्ड में आप पास हो जाएं, तो आई एम सॉरी सर, आई एम द लास्ट पर्सन टू बी एडवोकेटिंग दिस टाइप ऑफ मेथडोलॉजी. है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू एज एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस. So let us understand the organizational perspective. वही यही थॉट था ना कि a wise society teaches inquiry and not obedience, and you people show over obedience. अप्रोच मेरा क्या है उसके पीछे, अब आपको ये चीज अच्छी लगे, खराब लगे, लेकिन आई वॉज इंस्पायर्ड विद दिस. गीता का 12th चैप्टर 12वां श्लोक, हाफ पोर्शन, इट सेज लाइक श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासान ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते. इट सेज that knowledge is superior to hard work, and meditation that is very very close to conceptual clarity is far exceeding even the knowledge. So if you want to really, friends, progress, if you want to evolve, then make knowledge as your tool, conceptual clarity as a tool, which I'll be, okay, which is I'm guided with. Okay. And now I'm telling you what SSBs are there for. They are way, way beyond the popular beliefs. SSBs, they test you primarily for two sets of qualities. One, the qualities with which you perform your social and professional duties. These are the qualities of your mind, body, attitudes,
upbringing वगैरह. Second thing is, friends, remember, in our country, the armed forces are positioned in the most difficult situations, distance-wise, separation from your own hometown-wise, terrain-wise, temperature-wise. We require the person who remains happy. So the qualities with which you are staying happy, motivated, remain calm, and remain with a mental hygiene. I'm also saying that the SSBs, they look for certain qualities of your personality. And there are these two sets of qualities. But before that, now you are seeing everything is with the perspective of the organization. अब आप समझिए कि आप पूरी चीज को कैसे समझ सकते हैं. द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ एसएसबीज के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल रूट्स पर जाना पड़ेगा. और सबसे पहले बात कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस हैं क्या. नेशन, थ्रेट, क्राइसिस, सिक्योरिटी नीड, क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेटस ऑफ द आर्म फोर्सेस. और दूसरा, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ एन ऑफिसर. Then how the system tests you. So पहली बात मैं बताऊं कि every democratic nation has got a system of crisis management for the country. No system is free of the crisis, problems, difficulties. This is the crisis management system of our country, friends, from lowest to highest. You can see the armed forces are the highest crisis fighting agencies. F means fighting. P means preventive security. Armed forces are perching in the highest position as far as the crisis fighting system, the various organizations, is concerned. Remember, if the civil police fails, then another organization higher than this can be pressed into service. If these fail, then the paramilitary forces can be pressed into the service. And if the paramilitary services, they are unable to contain the threat, then the armed forces will be brought into the service. But what about the armed forces? एक बार armed forces, अगर वो भी किसी वजह से अगर crisis contain nahi kar pati, if they too are unable to contain the crisis, then what will happen? The fate of the country is doomed, sir. Beyond you, nothing. Beyond the armed forces, nothing. It's only the God can save the country. Therefore, we need the people with highest level of talent, with highest level of abilities, with highest level of mental and physical skills and strengths. This will be reflected in the level of task which you will give to your hero in the TAT. For example, अगर आप अपने TAT में simple, ordinary organization, college festival or taking your parents, to some तीर्थ यात्रा, है? इसका डिटेल जब TAT आएगा तो मैं बताऊंगा. लेकिन याद रखिएगा, just by showing the simplest level of task, however positive they are, you are not going to show the qualities of a military officer. A military officer's qualities are seen while he is handling the highest level of crisis. आगे चलते हैं. Now comes the conclusion of this. The armed forces are the highest crisis or the threat managing agencies. They need the highest level of manpower, resources, training, and efficiency. Now comes the officers' cadre. So for that, let's understand the features of the armed forces. Armed forces are like any other organization with certain common qualities, with certain exclusive qualities. Now comes the
features of the organization. Friends, in the management science, there is a jumla. वो जुमला क्या है? Plan the work and work the plan. When I say plan, planning does not mean only planning. Planning means all the managerial work. And work the plan means translate the plan into action. जो भी आप planning करते हैं उसको आप अपने action में दिखाइए. Accordingly, friends, आपको मिलेगा कि आर्म फोर्सेस में दो तरीके के, जैसे एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, दो तरीके के लोग मिलेंगे. दोज हु स्पेशलाइज टू प्लान द वर्क एंड दोज हु स्पेशलाइज टू वर्क द प्लान. जो प्लानिंग करते हैं, यानी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो मैनेजरियल फंक्शन करते हैं, लीडरशिप, दे आर ऑफिसर्स. You may call it as the leaders. They perform all the managerial functions and they are responsible for results. And those people who are responsible for efforts. आपने देखा होगा कि आर्म फोर्सेस में अगर किसी का कोई सरोकार रहा हो या किसी ने अगर एनसीसी किया हो तो आपको बताया जाता है कि जस्ट बाय सीइंग द यूनिफॉर्म यू कैन मेक आउट इफ द पर्सन इज एन ऑफिसर और नॉट एन ऑफिसर. देखो, यूनिफॉर्म का एक यूनिवर्सल रूल है द वर्ल्ड ओवर, that the officers, they carry their rank identification marks or the badges or the stars on their shoulders that you can see in the background, my own uniform. Okay. And the people who are non-officers, they carry it on their shoulders. Responsible for the results, responsible for the efforts. Okay. आगे चलते हैं. इसमें हम एक एक्सक्लूसिव फीचर देखेंगे. दिस इज फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट एज आई टोल्ड यू दैट जनरल फीचर क्या है? दे आर द ह्यूमन फोर्सेस. ह्यूमन फोर्सेस, द नीड द लीडर्स एंड फॉलोअर्स बोथ. What is exclusive? His performance is influenced by the quality of leadership. क्यों बोलो? Remember, it is a fighting organization and it needs the people with level of morale. An organization which is, let's say a troop which is well administered, well led, which is in the highest state of morale, can challenge even the highest enemy, okay, with mediocre level of leadership and logistics. ये मेरी बात आप देखेंगे इस स्लाइड पे. ये देखिए. Okay. I'm more afraid of an army of 100 sheep led by a lion than an army of 100 lions led by a sheep. In the eyes of this election board, friends, you are this lion who, despite having limited resources, poor manpower, yet because of your leadership, you will prevail upon the enemy. आप दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे अपनी लीडरशिप से, अपनी पर्सनल क्वालिटीज. तो young friends, remember what you are aspiring to be. You are aspiring to become an officer, and let's understand an officer is the leader of his troops who performs all the managerial functions and is responsible for the results of all his actions, omissions and decisions. अब आती है friends दो बातें. एक, what is the job profile of an officer and how the system is identifying those qualities and how the system is testing. ये मैं कल से ये मैं शुरू करूंगा. तो I hope that today, see, my objective was very, very clear. It was to examine those beliefs with which any person enters, takes the first step into the preparation for the armed forces. We have had a kind of an audit. We have examined that the conventional belief with which we are, those beliefs, they are piggy ride. जैसे होता है ना, कंधे पर बैठ जाते हैं, विक्रम और बेताल वाली कहानी होती है ना. तो बैठ गई हमारे कंधे पर, हम ले करके उसको ढो रहे हैं बस उसको.
I am not against OLQs, but OLQs, if only you take it for your own development, it's perfectly fine. Let me tell you, in my guidance program, in my dossier assessment program, many a time I say that your task has to be related to the day-to-day life situations, because you have to show the effective intelligence. And effective intelligence is what? Your ability to deal with the problems of daily life. अगर आप कॉलेज में एआई में कोई पर्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में टास्क आप बना लेते हैं, तो इट सर्टेनली इज नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस. तो ओएलक्यूज आप जानिए, बिल्कुल जानिए, लेकिन ओएलक्यूज को आप अपने डेवलपमेंट के लिए जानिए. एक आत्मावलोकन, अरे बड़ी हिंदी भी बड़ी टफ होती है बोलने के लिए मेनी टाइम ना. आप आत्मावलोकन करें. लुक इनवर्ड्स. Try to fathom yourself whether you are in a position to deal with the problems or not. Deal with the problems of day-to-day life. तो थोड़ा सा OLQs को कॉन्फिडेंस का ही मतलब होता है कि आप टफ सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में, यू मेजर योर रिएक्शन, whether you still remain forthcoming or you retreat. That is the measure of your confidence. तो OLQs को निश्चित रूप से आप लें, लेकिन OLQs को दिखाने के लिए मत लें कि दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट शोइंग दीज क्वालिटीज इन दी SSB responses. No, sir. OLQs are what? They are merely the situational manifestation of your basic qualities. हमें आपकी मकान की ईंट देखनी है, मकान नहीं देखना है सर. अगर ईंट आपकी मजबूत है तब तो सही है. ईंट ही नहीं मजबूत है तो आप कितनी बड़ी आप दीवार, जरा सी सिचुएशन आएगी धसक जाएगी दीवार. वर्क ऑन योर बेसिक्स. पॉजिटिव अप्रोच कुछ नहीं होता हमको. मैं बता रहा हूं, देयर आर कितने भी मोटिवेटर्स. एक सिंपल सा उदाहरण है, एक गिलास आधा भरा हुआ है तो पॉजिटिव है और आधा खाली है तो नेगेटिव. यानी इफ यू आर सीइंग, मैं कहता हूं मान लो कि तुम किसी डॉक्टर के पास गए और बोले कि सर मेरे दाएं कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए? वो देखना चाहिए कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, या ये दिखाना चाहिए कि भाई तुम्हारा बायां कान तो ठीक ठाक है, तो यू आर मैन विद नेगेटिव एटीट्यूड. भाई अनलेस यू नो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, हाउ यू कैन ट्रीट दैट. बोली एक बार मैं ऐसे किसी एग्जाम्पल मैंने दे दिया था कि एक थानेदार ने, हाँ, एक थानेदार को एसपी साहब ने बुलाया. उसने कहा कि तुम्हारे अंडर में जितनी कॉलोनी है उसमें 1,000 मकान है, और 1,000 मकान में मतलब पिछले एक महीने से 20 मकानों में चोरी हो चुकी है. तो थानेदार को क्या जवाब देना चाहिए कि सर यू आर मैन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, why you are seeing those 20 houses, why you are not seeing that okay 980 houses they are safe. तो ऐसे काम चलेगा. There are professions in which you have to pay attention to negativity, damn it. और जिसने नेगेटिविटी नहीं पहचानी, और एक बात याद रखिएगा कि आर्म फोर्सेस में दुश्मन कभी बता करके, आज वो जमाना गया, सावधान अर्जुन, उस तरीके से लड़ाइयां नहीं होती हैं. टुडे इज द डे ऑफ डिसेप्शन, सरप्राइज. एक क्वालिटी होती है. क्वालिटी किस बात की होती है? लेट अस से अलर्टनेस. अलर्टनेस अगेंस्ट व्हाट? एनी आइडिया? अलर्टनेस अगेंस्ट हिडन एंड अनसीन एनिमी. तो अगर अनसीन एनिमी आपके थॉट में नहीं है कि क्योंकि किसी चौधरी साहब ने आपको बता दिया कि ये तो नेगेटिव है, तो आप बताइए विल यू बी शोइंग अलर्टनेस? इसलिए फ्रेंड्स, ये इन चीजों को आप एक ऑडिट कीजिए. इनका लिमिटेड वैल्यू है, बिल्कुल. पॉजिटिविटी इज टुवर्ड्स योर मेंटल हाइजीन. You should be a person with the highest mental hygiene, but don't be specially conscious. आप में से कोई ऐसा है जो थानेदार के पास रिपोर्ट करने हर हफ्ते जाता है? Anybody who is undergoing some mental treatment? Anybody who has taken 5 years to pass secondary? अरे यार, सब लोग हैप्पी, हेल्दी, वेल एडजस्टेड, मीनिंगफुल इंडिविजुअल्स हो.
कोई ऐसा है कि जो अरे ये इस पूरे मोहल्ले में बदनाम है कि बहुत बड़ा एग्रेसिव है, उसके पास मत जाइयो भाई, वो तो काट खाने को दौड़ता है या दौड़ती है, कोई ऐसा भी है क्या? तो काहे के लिए एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हो भाई? वो आपके रिस्पॉन्सेज में अपने आप दिखाई देगा। यस, आप अपने रिस्पॉन्सेज को नेचुरल रहने दें, और कैसे नेचुरल रहने दें हम देखेंगे। बहरहाल, ऑल सेड एंड डन, थैंक यू रियली वेरी वेरी मच फॉर बीइंग सच ए पेशेंट लिसनर। आई वुड लाइक टू मैं कोई कोई भारत सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालों से मैं भागूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम, एक दो सवाल अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछें, मोस्ट वेलकम। और कल के बाद से मेरा डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए रहेगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल द जॉब प्रोफाइल में शुरू करूंगा कि एन ऑफिसर परफॉर्म द ड्यूटीज इन टू सिचुएशंस, द कॉम्बैट सिचुएशन एंड द कैंटोनमेंट सिचुएशन, वॉर एंड पीस, दोनों साइड में आप क्या करते हैं, उन कामों को करने के लिए कौन सी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज चाहिए। जैसे वॉर में यू गो विद अ वॉर प्लानिंग, टू मेक अ वॉर प्लानिंग व्हाट द क्वालिटीज आर नीडेड, लेट अस से imagination. To see the enemy, you require, to read the enemy, you require perception. So, in imagination, perception, analysis, evaluation, इंटेलिजेंस, इन क्वालिटीज को फिर सिस्टम कैसे इवेल्युएट करता है यूजिंग द थ्री टेक्निक्स, इसके बारे में बात होगी। डे आफ्टर दे विल कम टू दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट, और सारी मेरी मेथोडोलॉजी होगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्चुअली आपको इस प्लेन पर ले जाऊंगा। उसके बाद आप अपने रिस्पॉन्सेस से देखो, एक कोच और एक प्लेयर में क्या फर्क होता है, और कोच और एक अंपायर में क्या फर्क होता है, अभी आपको समझना चाहिए। कोच डज नॉट प्ले फॉर यू, कोच विल टेल यू हाउ टू प्ले, कोच विल गिव यू द पैरामीटर्स। लेकिन कोच आपको, अब जैसे अभी तो क्रिकेट का सीजन चल रहा है, मेरे ख्याल बहुत से लोग इसलिए भी भागे होंगे क्योंकि आईपीएल भी देखना है। हाँ? आप देखेंगे कि जैसे एक बॉलिंग का कोच है ना, अगर उसको फास्ट बॉलर है, लेटर से दुनिया में कितने फास्ट बॉलर्स हुए हैं, लेटर से अपने अपने यहां से शुरुआत कर लेते हैं, है ना। इस समय के जो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी है, और फॉर दैट मैटर वो जसप्रीत बुमराह है, और फॉर दैट मैटर वो कौन सा पंजाब का बाएं हाथ का बंदा, ओके, क्या है, अर्शदीप, कुछ ऐसे करके, है ना। अभी कल देखा सचिन तेंदुलकर का बेटा, वो भी 130 135 की उससे स्पीड से फ्री। क्या सबका एक्शन एक ही होता है? बोलो। नो सर। इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते भी आउटपुट एक है। लेट्स से समबडी, कल तो सिराज जो है कितना फेंक रहा था, मेरा ख्याल है कि 150 के आसपास, नहीं सॉरी, वो कौन सा जॉनसन था, कौन था, समबडी वॉज, है ना, जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर वाज थ्रोइंग एट a स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर्स। कभी कभी बुमराह की भी स्पीड उतनी चली जाती है, मोहम्मद सिराज की भी चली जाती है 148 149। सबका एक्शन तो एक नहीं होता है। तो एनी 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 कोच विल रेस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी, ना कि वो कहेगा नहीं तेरे को एक ही तरीके से भेजना है। जब एक ही तरीके से जब कोच बोलने लगता है तो फिर क्या करता है, ही इज देन overweighing his personality. I will tell you how to stimulate your own, I'll be stimulating your own individuality. Okay, पैरामीटर्स मैं आपको दूंगा, बताऊंगा आपको रोटी गोल और पराठा तिकोना बनाना चाहिए। आपको यह भी बता दूंगा कि कैसे किस स्ट्रोक से रोटी गोल बनती है बेलन के, और किस स्ट्रोक से पराठा तिकोना बनता है। लेकिन फोर्स आपका रहेगा, राशन आपका रहेगा। दिस विल बी माई अप्रोच। सो चलिए, एक दो क्वेश्चंस अगर आपको है, क्योंकि टाइम था, मैंने बच्चों बताया है। बच्चों मैं इनकरेज करूंगा कि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आप सर से अगर कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं दिमाग में, प्लीज आस्क। वैसे तो दूर हो गए होंगे सर इनके डाउट सारे, बट कोई भी बच्चा पूछना चाहता है, यू कैन रेज योर हैंड और आप पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू।
शॉक वाली स्टेट में है। टॉक वाली स्टेट में है। ओएलक्यू तो कुछ होता है So, नहीं, हमारे लिए नहीं होता है, तो sir, I ऐसे। have one question, sir. आकाश, यस आकाश। Sir, it will impact in your interview when you are unemployed in since long time, despite you are capable to doing this some work. देखो, you have got your own reasons. If you had a job, see, there are two things. One is, what is the correct strategy to establish in the life? The moment you are capable, the moment you feel like being independent, it's your own need that will push you to take up a job. The moment you feel assured that, well, तो ये आपका डिसीजन है. Nothing goes against, there is, वही मैंने कहा, there is no standard answer. आप ये कहें, you are going by perhaps the logic of some algorithm. ये मैं कहूंगा तो सही होगा, ये मैं कहूंगा तो गलत होगा. Nothing is wrong, nothing is right. ये मेरा ख्याल अलकेश और अभय हैं, उनको मैंने अपने एक इंटरव्यू का एक पोर्शन मैंने एक दिन मस्ती में आ गया था तो मैंने शेयर किया था. मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने वही सवाल पूछा जो आपसे भी पूछा जाएगा और जो मुझसे 50 साल पहले पूछा जाता रहा. मैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्स? मैंने कहा, हु वांटेड टू ज्वाइन द आर्म फोर्स, डैम इट, आई नेवर वांटेड. मेरा भाई जो है मेरे से कह रहा था कि तू चला जा उसमें. बोले, क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा, सर, आई एम डूइंग एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन सम कंपनी. ओके. कहता, हाँ, यू डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस? मैंने कहा, सर, मुझे पता है कि द मोमेंट मैं बोलूंगा, सर, आई वुड लाइक टू डाई फॉर माय नेशन एंड लिव फॉर माय नेशन वगैरह वगैरह, तो फिर वो कहेगा, फिर तू एनडीए में क्यों नहीं गया, फिर तूने एनसीसी क्यों नहीं किया, तो फिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया. मुझे पता था ये सब होगा. ऑनेस्ट आंसर इज कि सर, आई हैव नेवर कंसिडर्ड आर्म फोर्सेस एज अ करियर. ठीक है. My brother influenced me, and now I have also got the feel of being unemployed and feel of a struggler. So I feel now I should be having a job in hand. कहता, इसका मतलब तुमने ये एक्सप्लोर नहीं किया आम को? मैंने कहा, ना, कौन करता है भाई? एक दिन ले आया अखबार में, कहता है वैकेंसी निकली तो अप्लाई कर दो, तो कर दिया. कहते, अच्छा. कहते, देन हाउ यूल रिमेन हैप्पी? मैंने कहा, मैंने कब कहा कि मैं आई एम गोइंग टू बी हैप्पी देयर? आई हैव गॉट वेरी डिफरेंट क्राइटेरियन फॉर हैप्पीनेस. बोले, अच्छा, क्या है क्राइटेरिया हैप्पीनेस? मैंने कहा, सर, जहां पर आपको अपनी करने की मिले वहां पर आदमी हैप्पी होता है. बोले, अच्छा, कौन सा काम ऐसा है कि जिसमें लोग बहुत हैप्पी रहते हैं अकॉर्डिंग टू यू? मैंने कहा, सर, 3 काम है. अब नाउ लुक एट द इंटरव्यू. बंदा एयरफोर्स का ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स का इंटरव्यू देने जा रहा है और इंटरव्यू हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं तो कभी आना ही नहीं चाहता था. सोचा आप में से कोई करेगा ऐसी हिम्मत? आप लोग बिल्कुल रटोगे मुझे क्या बोलना चाहिए. फिर कहता है मुझसे कि व्हाट आर द जॉब्स विच विल ब्रिंग, व्हाट आर विच विच ब्रिंग अ कैंडिडेट सेटिस्फैक्शन. मैंने कहा, सर, 3 जॉब है. ध्यान से सुनना, सही है ये कोई, और वो बंदा अभी भी जिंदा है जिसने, और इसी इसी बंदे ने मेरे को बाद में सिलेक्शन सिस्टम में ले लिया था, इवन ऑन द रैंक ऑफ पायलट ऑफिसर. बाद में उसका प्रमोशन हुआ, वो विंग कमांडर था. व्हेन ही इंटरव्यूड मी, he went to the air headquarters and from there he selected me because he remembered that there was one idiot who says कि satisfaction 3 जगह से आता है. उन्होंने बोला, कौन सा है? मैंने कहा, सर, पहला है द जॉब ऑफ ए कुक. शॉप, जॉब ऑफ ए कुक. मैंने कहा, हाँ सर. 2, द जॉब ऑफ ए म्यूजिशियन. 3, जॉब ऑफ ए प्रोफेसर. नो आर्म फोर्सेस, दे आर नॉट फीचरिंग इन योर माइंड. मैंने कहा, मैंने सही बात बता दी, आगे आपकी मर्जी. बताइए. माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. क्या सही होगा, क्या गलत होगा? सही बात है, सही बात है. आई हैव नेवर ट्राइड फॉर आर्म फोर्सेस, आई वाज नॉट मोटिवेटेड, इट वाज एक्सटर्नल मोटिवेशन. सही से बता दी. एंड लेट मी टेल यू, मैंने पूरी जिंदगी में एक ही बार मैंने चेस्ट नंबर पहना, उसी से मैं रिकमेंड हुआ, उसी से मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ, उसी से मैं मेरिट में आया, उसी से मैंने कंप्लीट किया अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, उसी से मैं ग्रुप कैप्टन बनकर के बाहर भी आ गया. और एंड आई ऑप्टेड आउट. ये शिवम से आप पूछ लेना. 2016 में आई वॉज वेरी वेरी यंग एंड आई ऑप्टेड आउट. तो आई होप यू गॉट माई एसेंस.
डोंट गो बाय दिस कंसिडरेशन सर कि ये सही है ये गलत है. अगर आपने if you had the opportunities, okay, and you did not opt for a job, then it must be for some reason. I am sure कि आपने बैठ करके घर में आइसक्रीम खाने के लिए you have not chosen this time. You must be having some other activity to or other career to pursue. आप उसको बोलिए, कन्विक्शन के साथ बोलिए. खत्म हो गई बात. Yes, sir. That is my main confusion, sir. Because since I'm preparing for the exam, every second day that thought will come in mind. So how I will justify in this question, sir. हाउ यू देखो, एक बात मैं बताऊं कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा किससे? ट्रूथ से आएगा. झूठ बोलने से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता. एक मिनट, मैंने अभी कल परसों ही किसी ने मुझको एक थॉट भेजा. जस्ट बेयर विद मी फॉर 30 सेकेंड्स. मैं निकालता हूं अपने फोन से. मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया. कहीं चला गया. ठीक ठीक. जस्ट बेयर विद मी. आई अप्रिशिएट योर पेशेंस. ये लगता है कि कहीं मैंने somewhere it has gone. बता रहा हूँ उसका एसेंस क्या है, मैं बता देता हूँ. There was some gentleman who has written, don't ask a person why he has lied. एक आदमी से मत पूछना कि तूने झूठ क्यों बोला, क्योंकि वो दोबारा फिर झूठ बोलेगा. I hope you understood. So don't write something which is not a fact. The fact will give you the confidence. Whatever your reasons are, right or wrong, I am not saying. भाई ऐसा थोड़ा है कि किसी लेवल पर आप गलती नहीं करते हो. इट मे बी योर रॉन्ग डिसीजन, डैम इट. ठीक है, डजंट मैटर, बट बी ऑनेस्ट एटलीस्ट. अगर मैंने ये नहीं बोला होता कि हाँ साहब मैं आर्म फोर्सेस में नहीं आना चाहता हूं, you know what he has ultimately, when I was subsequently interviewed by that person, मुझे नहीं पता था कि वो सिग्नल आया था मेरी यूनिट में बैंगलोर में कि पायलट ऑफिसर A.K. Srivastava is to report to air headquarters room number this particular thing, for a matter which will be disclosed by the interviewer. तो वहां पर 3 ऑफिसर बैठे हुए, 3-4 ऑफिसर बैठे हुए थे. एंड दिस ऑफिसर हु वाज देन विंग कमांडर वाज द ग्रुप कैप्टन. एंड वो बैठे हुए थे. एंड ही टोल्ड, दाएं बाएं देख करके, पहले तो मजाक में बोला कि ही इज द पर्सन हु हैज टोल्ड कि आई नेवर वांटेड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस. वो पता नहीं क्या बोल रहा था. श्रीवास्तव, यू रिमेंबर व्हिच वाज दोस 3 जॉब्स व्हिच यू टोल्ड दे वर फेचिंग यू द हाईएस्ट? मैंने कहा हाँ सर, एक कुक, एक म्यूजिशियन और एक प्रोफेसर का जॉब. एनीवे, कहता है, gentleman, I found this person very, very independent in thinking and very creative one. And he is a person who is giving the offbeat answers rather than towing the line. So you will be appreciated for your truth, sir, and your conviction. So I hope that you have got the answer. Whatever your reasons are, go absolutely bindas. ठीक है? Yes, sir. Got it, sir. Thank you, sir. अब इसके बाद you need to smile by हुकुम. ये हुई ना बात. Yes. Anyone else? Thank you, sir. Lovely question it was. Sir, may I? Anyone from the girls? Yes, Asrita, please go ahead. Sir, good evening, sir. Myself, Ashrita. So first of all, really thank for such enlightenment session. Secondly, I'm from law background, and I just want to know what are the roles and the responsibility of a law officer in the Air Force. Like, how is their life? Okay. And if you have witnessed any such law officer during your service, Oh, number of. share any such stories, sir. Number of. देखो, we have got a legal branch. They call it JAG, JAA, Judge Advocate General Branch. We have got all the professionals
doctors, engineers, professors, okay, the legal people, okay. Now, remember one thing, that the law is a very, very important aspect, because whenever human behavior is there, some part of the human behavior would fall to be legal and some part will be out of the legal frame. You understand? There are some errands, deliberate errands. Okay. So your job will be basically to look for those court of inquiries, conduct the court martials. If the court martials are coming like in the air headquarters, Wali Bhavan, there is a legal cell. You will be giving the opinion of the people. There are many people who go against the services for litigation, hundreds and thousands of litigations. So you will be there briefing your seniors about the legalities. You will be vetting the judgments, right? Whether to further continue in litigation. Let's say if the tribunal court is giving a decision in somebody's favor, whether you should go against that or you should be then implementing whatever is there. Most active part of the legal officer will be conducting a court martial. Remember, I mean, if you are a law background person, then I can tell you a little bit. It will be a matter of interesting for you people, that in our country, once upon a time, there was the system of jury trial. And the last of the jury trial was Commander Nanavati's case, who was again a defense officer. You must have seen there was a movie, Akshay Kumar वाली movie है ना? देखना, बड़ी मजेदार मूवी है. सो हमारे देश में भी कभी जूरी ट्रायल हुआ करते थे. जूरी ट्रायल का मतलब हुआ कि जज वॉज बाउंड टू, मतलब जूरी में कुछ मेंबर्स जो सोसाइटी में ऑनरेबल थे, दे आर नॉट लीगली क्वालिफाइड पीपल, लेकिन किसी को पकड़ करके ले आ करके, मतलब उनको कि यू आर अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू हेयर द केस, यू बी द पार्ट ऑफ द हियरिंग, ओके, यू गिव योर independent opinion, right? In the court martials, we have got the three types of court martials: district court martial, general court martial, and summary general court martials. Okay, DCM, SDCM, and क्या मैंने बोला, DCM, general court martial, मतलब depending on the the applicability of the crime and the there are three offenses which we generally avoid. हालांकि we can do it. That is murder, rape, and culpable homicide. These are the things which we generally try, but we can try it. We have got the concurrent jurisdiction. Okay. Rest everything, let us say somebody has failed to perform the duty, somebody was, misappropriated the funds or the resources, somebody has failed to do the duty and the court martial was recommended for him. In the court martials, we have got still the system of jury trial. I was the court martial, 3-4 court martials as a member. Okay. In the court martials, okay, depending on what is the composition of the court, three members, 4 members, 3 members, 5 members, 7 members, the only speaking member is the judge advocate. Because we are not legally qualified. We are the people who are applying our wisdom and opinion. But its legal interpretation and being the coordinator between the prosecuting officer and defending officer, and as far as the proceedings are concerned, these are the jobs of the legal officer. I hope now, Ashrita, you have got a broad overview of what a legal officer you are going to do. But you'll be wearing the uniform. Your first duty will be being the combatant member. You'll be trained like any cadet of administration branch. Subsequently, it will be your specialization. Thanks a lot, sir. Anyone else, बच्चों? Last question. Yes, sir, I do have a question. Yes, Chirag. Sir, as you said that there's nothing right or nothing wrong in psychology test or maybe any test as such. So what do they actually check or basically draw a line? Okay, this is what we actually want. I told you that your job profile needs certain qualities, and your qualities are reflected from your responses. Let's say your finished response in TAT is the story. Your finished response which you present is in the WAT is a thought presented through a sentence.
So we'll be examining the contents, and then we will be examining the depth, and then whether this thought is aligned or not with the employability of an officer. अभी तो मैंने बताया नहीं कि who is employable. I am simply saying that the profile of a job, an officer, is there are two situations. One is the combat situation, one is the cantonment or the peace area situations. So in the combat situation, what are the functions and what are the qualities? How these qualities are manifested in your responses and how the system judges you. ये तो tomorrow onwards that will be happening. So this is a little, I would say, premature, but don't worry. There's nothing like a right or wrong answer. Yes, it is psychology, sir. अच्छा एक बात मैं बताऊं. I think it was चिराग ना वो. Yes, sir. Now, अभी कितने लोग हैं? I can see शक्ति देव, रजत, जिनके चेहरे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं. दीपश्री, Shreya Kumari is there, Chirag is there, Alkesh is there, Dhruv is there, Shivam is there, Aboli, Nimle, Vaishnavi, and Abhay, of course. Abhay and Alkesh चला गया क्या? जो भी. ओके, तो करीब करीब जो है मेरे पास इतने लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं. राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, sweet 16. Good. Imagine that in sweet 16 के घर एक फैमिली, अच्छी फैमिली, बहुत दिनों के बाद, इंपॉर्टेंट फैमिली, they are visiting. ठीक? And you will definitely you will love to treat them with lunch. और फिर सभी लोगों के घर में एक आता है कि हाँ भाई चलो एक अच्छा सा मेन्यू बनाते हैं. And you are given the responsibility of making the lunch menu. हाँ जी, अब आप बताइए. Will you all be making the same menu? Can any menu be given the key? This is the menu. This is the right menu. This is the wrong menu. Huh? बोलो. डिफरेंट होगा सबका. सबका डिफरेंट It होगा. will be different. It will be different. तो अब यही साइकोलॉजी. Availability of resources. अरे नंबर ऑफ थिंग्स यार, कोई एल्गोरिदम थोड़े है. अब अमेरिका में मोदी जी पहली बार गए, है ना, बहुत बड़ा लाविश उनके सम्मान में भोज दिया गया. उन्होंने कहा मेरे तो नवरात्र में तो सिर्फ पानी पीऊंगा. अब लो. सो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, फूड नेचर, योर थिंग, है ना. हमसे किसी ने कहा कि सर आप नॉनवेज खाते हैं. हमने कहा सर हम नॉनवेज नहीं खाते, हम खा लेते हैं. अब लो भैया, अब करो तुम बात. खाते हैं और खा लेते हैं में क्या फर्क होता है? I won't ask for it, but I won't deny it either. But I won't fall for it कि I'll be having one drive, इस तरीके से वो सब. So in psychology, friends, there is nothing like a right answer, wrong. It is how much appropriate it is with respect to the situation. इस पे आपको कन्विंस होना पड़ेगा, बिकॉज राइट फ्रॉम बिगनिंग यू गाइज हैव बीन गिवन टू फील कि कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है. यू हैव बीन सप्लाइड. ये एकेडमिक यही तो माइंडसेट है. व्हाट इज एकेडमिक माइंडसेट? आर एंड आर. रिसीव, रिटेन, रिप्रोड्यूस. आपको राइट फ्रॉम बिगनिंग इंटरनल एंगल ऑफ द सम टोटल ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. इट इज द राइट आंसर. In psychology, testing is not testing. It is not examination. It is called as the test of individual differences. How Chirag is different from Rajat, and Rajat is different from Akash, and Akash is different from Prabha. यही मैं कह रहा हूं ना कि don't enter the SSB preparation with this mindset. मैंने क्या बोला था? Who is the first stakeholder? The candidate, and the candidate is confused candidate. Because the candidate doesn't know what he should get. भाग गया. क्यों? Are you convinced or not? Yes, sir. Yes.
and be convinced. It is, don't be convinced only situationally कि हाँ in the classroom I'll be standing out, ऐसे करके. It Yes, is, sir, I got the I fact. got the gist, sir. It is the fact of life. Yes, 5 questions more. चलो, 5 questions more. ओके बच्चों, प्लीज सोट योर क्वेश्चंस बेटा. एनीवन ऑन यूट्यूब पे भी हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं सर. एनीवन फ्रॉम यूट्यूब कैन चैट, पुट अप इन द चैट. मैं सर को क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा. दो 1 मिनट, दो चैट के 2 क्वेश्चन, 2 आए हुए रिस्पॉन्सेस. सर एक तो जय हिंद एंड ग्रेट इंसाइटफुल लर्निंग, थैंक्स अ लॉट. दिस इज वेदांश सोनी एंड ध्रुव हैज टोल्ड डिफरेंट. गुड. चलिए, तो इफ, चलिए अब 5 क्वेश्चंस नहीं तो 4 क्वेश्चंस, 4 नहीं तो 3. चलिए, लास्ट क्वेश्चन. अगर नहीं तो फिर थैंक यू रियली वेरी मच, एंड आई विल से दैट nice of you for being such a lovely audience. Okay, and my course will continue. Okay, tomorrow onwards we shall be having the topic, what is the job profile of an officer, and what are the qualities associated with those job profiles, and how then the system tests you. Day after onwards we'll come on to the psychological test, that is TAT. मे आई टेक अ सेकंड. हाँ, 1 मिनट. हाँ, yeah, go ahead, बताइए. हाँ सर. सो whosoever wish to continue in the batch, there are many kids जो बच्चे ऑलरेडी enrolled हैं बैच में सर. इसको रिकॉर्डिंग में ऑफ कर दूं ना? सर हाँ, यू कैन ऑफ इट सर. रिकॉर्डिंग तो अभी बंद कर देते हैं, उसके बाद देन दी